friends, welcome to Bunk once again, and this is Dr. Khushboo to explain the topic called excretory system और ये हमारा पार्ट 4 है क्योंकि हमने और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन हाउ नेफ्रॉन filters blood to take urea out in urine. पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल अधूरा है because without knowing the structure of nephron this is not going to possible to understand the function of this particular nephron, right? तो इससे पहले कि हम समझ पाए कि ये नेफ्रॉन काम कैसे कर रहा है और यूरिया जो हमने बनाया था एज अ टॉक्सिक वेस्ट अमोनिया को और मिथेन साइकिल में लीवर से परफॉर्म करके और फिर हम उसको ब्लड में डाल ले या फिर ब्लड से लेकर के किडनी के पास आए, किडनी को बोलो लो भाई इस ब्लड को फिल्टर कर दो, तो किडनी ने बोला कि ये नेफ्रॉन करता है। पर किडनी के अंदर जाके देखते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर इनसाइड द किडनीज। पर ये जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनीज, क्योंकि हमारे पास 2 किडनीज हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, सो दैट इज फिल्ड विथ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। और ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स करते क्या है, इसके लिए समझने से पहले ये होते कैसे हैं और कहाँ पे अरेंज होते हैं किडनीज में, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन वी कैन अंडरस्टैंड ओनली हाउ इट is going to filter the blood and how it is going to take the urea and pouring it inside the urine. Okay, so let us understand about the nephrons. So several millions of nephrons are there in the kidneys. उस millions of nephron के अंदर सबसे important जो हमें समझना है, ये जो वोमन वो जो नेफ्रॉन है ये आया कहाँ से। ओके, तो ये तो ऑफ कोर्स ये उसके रीनल टिब्यूल्स है। रीनल टिब्यूल्स मतलब रीनल मींस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट इट, सो रीनल इज द किडनी, राइट? रीनल एक किडनी है, रीनल मींस किडनी। तो मगर किडनी के अंदर जो इतने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता तो ये तो हमें दिख रहा है कुछ घुमावदार सा दिख रहा है, तो ये जो घुमावदार सा ये अरेंज कैसे है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो इस बेसिस पे हमारे पास जो नेफ्रॉन है वो 2 तरीके के होते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं कि ऐसे सबसे पहले एक पर्टिकुलर ऐसे बो शेप का स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल, एंड देन ये आज ये मेरा not functioning well but still anyway, so ये जो हमारा वोमेन कैप्सूल है यहाँ से हम एक कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स बनाते हैं लाइक दिस। कॉन्वुलेटेड मींस घुमावदार टिब्यूल्स, और फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ ऐसे, ठीक है? तो ये नीचे की तरफ आता हुआ और फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, like then again we are going to form this घुमावदार tubules called convoluted. So घुमावदार means convoluted, we all know घुमावदार मीन्स कॉन्वुलेटेड। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर आपको बो जैसा दिख रहा है ये बीसी है। बीसी क्या, बिफोर क्राइस्ट, इट इज बोमन कैप्सूल, ठीक है? बोमन कैप्सूल एंड देन ये घुमावदार टिब्यूल, यू कैन एक्नॉलेज हियर दिस इज पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब कोई भी चीज, सपोज यहाँ कोई चीज अटैच है और इसका पहला पोर्शन इज प्रॉक्सिमल और इससे जो दूसरा अटैचमेंट का पोर्शन है वो डिस्टल है, तो आगे वाला प्रॉक्सिमल, पीछे वाला डिस्टल। ओके, पीसीटी क्योंकि ये बोमन कैप्सूल से आगे वाला पोर्शन है तो ये प्रॉक्सिमल होगा। एंड कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड का मतलब जो घुमावदार आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज कॉन्वुलेटेड, और टी मींस ट्यूब्यूल्स तो आप देख ही रहे हैं। ओके, सो इट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये पीसीटी से नीचे आता हुआ, नीचे आता हुआ इज डिसेंडिंग, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये जो आप ऐसे लूप बना के बैठे हैं ना लाइक दिस, ये जो लूप आपको नजर आ रहा है डायग्राम में भी ऑलरेडी, सो दिस लूप, ये जो लूप है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और यही लूप ऑफ हेनले जब ऊपर जाएगा इसको कहेंगे ascending limb of loop of Henle, okay? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? Now again we can see this, you can admire this convoluted tubule here, क्योंकि ये पीछे का है और ये distal है, DCT means distal convoluted, distal means ये attachment के पीछे का portion, distal convoluted means ये जो घुमावदार tubules होते हैं convoluted, and this is called tubule. Okay, so distal convoluted tubule and which is leading to a structure called collecting duct. Okay, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट।
Now, again going to this Humavdar tubules. Okay, so these are called Bowman capsule. You can admire this Bowman capsule here. Then there is a PCT, then descending limb of loop of Henle, then ascending limb of loop of Henle, then again Humavdar tubule called DCT, and then it is going to merge into a large duct called collecting duct. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो ये समझ सकते हैं फिर से, लाइक आई कैन गिव वन before Christ means Bowman capsule, PCT, ascending descending limb of loop of Henle, and then ascending limb of loop of Henle, then DCT, okay, and then it is leading to collecting duct, which is 6. Okay, so this is how the renal tubules are. So these renal tubules, which is the structural and functional unit of kidney, is called nephron. इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ होता है. काम क्या है इसका? फिल्टर करने का. क्या फिल्टर करना है? ब्लड. ब्लड फिल्टर करने के लिए ब्लड तो दोगे ना, तो ब्लड देते हैं. सपोज ये जो आर्टरी आ रहा है तो आफरेंट है, और जाएगा तो जाफरेंट तो हो नहीं सकता, इफरेंट कर देते हैं. तो आफरेंट आ रहा है तो जो आफरेंट आर्टरी है वो थोड़ा सा मोटा है कंपेरेटिवली, तो जाने वाला जो जाफरेंट आर्टरी मींस जो इफरेंट आर्टरी है, दिस आर्टरी इज बिट thinner as compared to the afferent one. So afferent artery is very huge. You can see afferent artery is very huge and efferent is the thinner one. Afferent artery is huge artery, is thicker, and efferent is the less thicker artery. Means you can admire this, the thickness is very less as compared to the afferent artery. So what will happen when the blood is poured inside this afferent artery, so there is a bunch of capillaries you can see. Okay, so this bunch of capillaries which are forming a bunch here, a tuft. So you can say it is a tuft of capillaries. Okay, so tuft of capillaries, and then this tuft of capillaries is leading into the efferent artery. Okay, afferent artery, glomerulus, which is called tuft of capillaries, and then it is going down to form efferent artery. तो यहाँ pressure बनेगा. Input is high, output is low. When input is with high pressure and the output is low with low pressure, because the high because the arteries, blood is coming with a larger vein, and then blood is going out with a lower vein, like the thinner vein. उस वजह से यहाँ पे the tuft of capillaries, you will feel pressure here. So the pressure is felt at this region called tuft of capillaries or glomerulus, और इसी वजह से blood का filtration है. इसको एक थोड़ा और greater version में पढ़ते हैं. Let us understand it again. You can admire this Bowman capsule. Okay, so this one is Bowman capsule. Bowman capsule को थोड़ा erected way में पढ़ते हैं like this. Okay, so this one is Bowman capsule. And then of course the PCT and DCT, whatever you know, so that we're not going to discuss that. So यहाँ से जो afferent, the artery which is coming is what? Is thicker one. So this one is afferent artery. The artery which is thicker one is afferent artery, and then it is emerging out smaller artery. Okay, so you can see the thickness. Thickness is very large in afferent. So afferent is more diameter. Okay, so afferent is having more diameter with greater diameter as compared to the efferent one. So efferent artery, you can admire, efferent artery is having a lesser diameter. Okay, it's having a lesser diameter. So you can see a tuft of capillaries here. This tuft of capillaries, they are called glomerulus. This tuft of capillaries are called glomerulus. Okay, this tuft of capillaries you can admire here. This is called glomerulus. Okay, now see this glomerulus, this artery is having a greater diameter. So this one is afferent artery. This artery is having very little diameter as compared to the afferent one, very less diameter as compared to the afferent. So this one is efferent artery. So going artery is thicker and coming artery is thinner. तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि जाने वाला जो ब्लड है वो ज्यादा मात्रा में जा रही है एज कंपेयर टू द ब्लड
जो आ रहा है वो कम मात्रा में वापस आ रहा है। सो व्हाट यू कैन फाइंड हियर, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के बाद क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर, एंड not prefer, it is pressure. Okay, in tuft of capillaries you can find a pressure is created, or this glomerulus you can acknowledge. Glomerulus is a tuft of capillaries which are formed by the making a tuft of arteries afferent, and the artery which is emerging out is efferent. Okay, the emerging artery is efferent artery, which is of lesser diameter as compared to the afferent. Because of that, a pressure is created in the tuft of capillaries called glomerulus. So glomerulus you can acknowledge it is a tuft of capillaries. Tuft of capillaries. Okay, so tuft of capillaries is glomerulus, and because of this artery's diameter, a pressure is created, और pressure से हमेशा filtration होता है, and this pressure will lead to the filtration of blood. I guess everybody understood. क्या समझ आया? जो हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें सबसे पहले कॉमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन इस पीसीटी, बीसीटी, एलओएच, डीसीटी, सीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे तो सिर्फ रीनल टिब्यूल्स हैं, और इस बोमन कैप्सूल के अंदर क्या है, ये दिस tuft of capillary is called glomerulus afferent and efferent. I hope everybody understood this. Okay, तो ये जो tuft of capillaries में आपको afferent और efferent नजर आ रहे हैं, these are along with this Bowman capsule, इसे हम कहते हैं Malpighian body. तो Malpighian body के पास क्या क्या होगा, Malpighian body के पास Bowman capsule, Malpighian body के glomerulus, which is the is Malpighian body, glomerulus lead out afferent. Marquise tubules comprises of the Bowman capsule and glomerulus. This portion you can say this Malpighian corpuscle, or you can say Malpighian body. Malpighian corpuscles. Okay, everybody understood? But again, the question is, these Malpighian body, or this whatever we are discussing about the renal tubule, ये बॉडी में होते कैसे हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हाउ ये जो हाउ दिस Malpighian body, Malpighian corpuscles, how these renal tubules, how they are arranged inside the body. Okay, inside this nephron. So how they are arranged, this is the main question, कि ये अरेंज कैसे होते हैं जिस किडनी के अंदर, ये कॉर्टिकल पार्ट में है या मेडुला पार्ट में है, ये किस तरीके से है, ये अरेंज कैसे होते हैं. So we will that discuss later on in the next lecture. Till then, you should find how the blood is getting filtered and how urine is formed.